I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Sri Nawab Rabia. A prominent political personality from Arunachal Pradesh, Sri Rabia served in Rajya Sabha earlier in 1996 and 2002. It is his third term in this August House since June 2020. He had been a member of Arunachal Pradesh Legislative Assembly for 2 terms, 2009-14 and 2014-19, and had served as a Speaker of the Assembly from June 2014 to 2016. He had also been the political and legal advisor to the Chief Minister of Arunachal Pradesh. He is married to Srimati Nabam Dum Sap and have 2 sons, Nabam Takar, Nabam Legia, and 2 daughters, Nabam Kasmin and Nabam Ninungu. On my and your behalf, I wish him a long, healthy and happy life. Extend our greetings to his family and friends. Papers to be laid on the table, Dr. Jitendra Singh. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2(1)(a) के आगे मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1B in today's revised list of business. Shri Ashwini Kumar Chobe. अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 2(ग) पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2D पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखती हूँ। श्री BL वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2E पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधन कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित संविधान के अनुच्छेद 151 खंड 1 के अधीन प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सदन के पटल पर रखता हूँ। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर करेक्टिंग आंसर टू क्वेश्चन, श्री राव इंद्रजीत सिंह। Chairman sir, I rise to lay a statement in English and Hindi correcting the answer to start question number 223 given in the Rajya Sabha on the 21st of March 23 regarding cases pending with the NCLT. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce, Dr. Abhishek Manu Singhvi, Shri Sir. Jugal Singh Lokhandwala. Yes. Thank you very much, sir. I rise to present 181 and 182 report in English and Hindi of the department-related parliamentary standing commerce and mentioned again my name in list of business. Thank you very much. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change, Shri Jairam Ramesh. Mr. Chairman, sir, with your permission, I rise to present the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change. Number 1, the 388th report
on the action taken by the Department on the recommendations and observations contained in the 373rd report of the demand of grants 2324 of the Department of Atomic Energy. Number 2, 381st report on the action taken by the government on the recommendations and observations contained in the 374th report on the demands of grants 2324 of the Department of Biotechnology. 382nd report on the action taken by the Department on the recommendations, observations contained in the 375th report on the demand for grants 2324 of the Department of Scientific and Industrial Research. Number 4, 383rd report on the action taken by the Department on the recommendations and observations contained in the 376th report on the demand of grants 2324 of the Department of Science and Technology. 5, 384th report on the action taken by the Department on the recommendations, observations contained in the 377th report on the demand of grants 2324 of the Department of Space. Number 6, 385th report on the action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 378th report on the demand for grants 2324 of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. And finally, sir, number 7, 386th report on the action taken by the government on the recommendations and observations contained in the 379th report on the demand for grants 2024 of the Ministry of Earth Sciences. Thank you, sir. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, Shri Jugal Singh Lokhandwala. थैंक यू वेरी मच माननीय महोदय। मैं विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंधित संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। देश में महापत्तनों का कार्यकाल विषय के संबंध 352वां प्रतिवेदन। दूसरा, हवाई किराए के निर्धारण मुद्दों के विषय के संबंध में 353वां प्रतिवेदन। तीसरा, रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज, सर्विस रोड का निर्माण और सड़कों निर्देश समीक्षा के विषय के संबंध में 354वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सर। Report of the Committee on Petitions, Shri Sujit Kumar. Dr. L. Hanumanthaya. Chairman sir, with your kind permission, I rise to present the 162nd report, both in English and Hindi, of the Committee on Petitions on the petition praying for comprehensive medical facilities to central government employees, pensioners and their dependents. Thank you, sir. Report of the Joint Committee on Offices of Profit, Ms. Dola Sen. Lok Sabha on examination of election of one member of Rajya Sabha to the Central Advisory Board on Disability constituted under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Thank you, sir. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में मेरे नाम के सामने अंकित क्रमांक 3 चा में कृषि एवं पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। इसी तरह से क्रमांक 3 के अंतर्गत छा में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture,
Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. श्री कैलाश सोनी जी, माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में मेरे नाम के सामने अंकित क्रमांक 3 के अंतर्गत छा कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। रिपोर्ट्स of the Department related Parliament Standing Committee on Communications and Information Technology, Shri Lahar Singh Siroya. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 49वां, 50वां और 51वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Reports of the Department related Parliament Standing Committee on Defence, Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. Honorable Sabhapati ji, I rise to lay a copy of each of 40th and 41st report, Hindi and English version, on the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business as follows. 40th report, General Defence Budget, Border Roads Organization, Indian Coast Guard, Defence Estates Organization, Defence Public Sector Undertakings, Canteen Store Department, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pensions. 41st report on assessment of welfare measures available to war widows and families in armed forces. Thank you, sir. Statement of the Department related Parliament Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, श्रीमती कांता करदम। धन्यवाद सर। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस स्थानीय समिति के अंतिम कार्रवाई वक्तव्य हिंदी और अंग्रेजी संस्करण एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, श्रीमती महुआ माजी। Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy of the English report, 8th report in English and Hindi, 17th Lok Sabha of the Committee on Empowerment of Women, 2022-23 on the subject Working of National Commission for Women and State Commissions for Women as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Committee on Public Accounts, Shri Shakti Singh Gohil. Thank you, Chairman, sir. With your kind permission, I rise to lay the item number 3I listed in today's revised business of listed to lay the following reports, Hindi and English version of the Public Accounts Committee 23-24. 1. 69th report on issues relating to accounts of cess and levies. 2. 78th report on failure to implement Ministry of Railways orders resulted in damage to railway cables, South Eastern Railway and West Central Railway. 3. 71st report on implementation of USOF project phase 1 to provide mobile services in area affected by the left-wing extremism. 4. 72nd report on irregularities in awarding of major works of SIPS SEZ Authority Mumbai. 5. 73rd report on action taken by the government on the observation recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 106 report of 16th Lok Sabha on improper management of defence land. Thank you, sir. Statements by Ministers. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding status of implementation and recommendations contained in the 336th report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Climate Change
on demands for grant 2020-21 pertaining to the Department of Science and Industrial Research DSIR in the Ministry of Science and Technology. Thank you, Chairman, sir. Shri Ajay Bhatt. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन को प्रोत्साहन, विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों और भारतीय दूतावासों की भूमिका विषय पर विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। Honorable members, Honorable Leader of the Opposition, I have received notices under Rule 267, under Rule 176, and also under Rule 167. It is for the first time that notices under Rule 167 have been received. I would urge your patience. I will deal them at seriam first 267. Honorable members, I have received 48 notices under Rule 267. 45 members have demanded discussion on the ongoing situation of violence and unrest in Manipur. Srimati Priyanka Chaturvedi and Shri Sushil Kumar Gupta, members have demanded discussion on situation in both Manipur and Haryana. Shri P. Wilson, member, has demanded discussion on issue relating to governors. As the notices are not in conformity with the rules and my ruling dated 8 December 2022, I am unable to persuade myself to allow the notices received for today. Honorable members, I have received 19 notices for short duration discussion under Rule 176. 18 notices are on the issue of concern over pushing the agenda of the Communist Party of China by an Indian online news network, and one is regarding concern over communal violence in parts of Haryana. Honorable members, I have received 3 notices under Rule 167, 168 from Shri Tiruchi Shiva, Shri Binoy Vishwam, and Shri Alamaram Karim, members expressing their concern over prevailing situation in Manipur. Honorable members, you may recall the discussion on the same subject was initiated in the Council on 31st July 2023. There was disruption, it could not fructify. I do not wish to, one second. I do not wish to go into the background how the discussion could not take place. On 167, without going into the conditions of admissibility, I would like to confer with the leaders of the political parties, as this may be an opportunity for us to find a way out, and this I will do it at the earliest at 1 p.m. today. Would you like to say something, sir? Oh, okay. Honorable Leader of the Opposition. Only on this issue. No, Leader of the House. One second. Precisely, I need your input on 167 notices for 2 reasons. One, I have got the formal notices for the first time, but in public domain, in various newspapers, this issue has been coming up. Some of the news reports quoted that there has been consensus on the issue. I do not wish to go into that background. On the notices that I have received today, you may please indicate. Sir, no, 1 minute, let me. I have कभी तो बोलने भी दिया करें. So we had Sir, received. Neither you nor Jairam Ramesh can have the grievance of not being allowed to speak. उनको पर्सनली बोल रहा हूँ सर, आपके माध्यम से. सर, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी सीनियर लीडर से विपक्ष के कि मैं 4 वरिष्ठ पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाऊं चाय पे चर्चा करने के लिए और कोई मार्ग निकालें इस विषय में. मैंने सर चारों को रिक्वेस्ट किया
रिक्वेस्ट ही नहीं किया, परसुएड करने की कोशिश की कि मेरे साथ आके चर्चा करें। एक आध घंटे तक तो ये सिलसिला चलता रहा कि आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। उसके 1 घंटे बाद एक उन 4 में से एक सदस्य मेरे कमरे में आया और कहते हैं कि हम तो आपके कमरे में चारों नहीं आ सकते, आप और आप भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या नहीं आओगे? सर जरूरी है ये सबको मानना, और इससे सेंट्रल हॉल में मिलते हैं। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर ये जरूरी है, सर ये जरूरी है, क्योंकि मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि मानसिकता कैसी है, मानसिकता कैसी है कि हम आपके कमरे में नहीं आ सकते। मैं लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी नहीं हूँ, सभी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कहा गया हम आपके कमरे में नहीं आ सकते, आप एलओपी के कमरे में नहीं आएंगे तो सेंट्रल हॉल में मिले। मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं एलओपी के आता हूँ, और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम स्वयं एलओपी के कमरे में गए, हम स्वयं गए चर्चा करने। मैं सिर्फ मानसिकता दिखा रहा हूँ। ऑनरेबल मेंबर बोलते हैं चर्चा करने आइए, करना हम आते हैं, आप हमें चाय पे वन सेकेंड, और जब मैं बुलाता हूँ तो हम आपके लीडर ऑफ द हाउस, अब चर्चा इस तरीके से होती है, कंसेंसस इस तरीके से बनता है। ऑनरेबल मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि क्या ये तरीका है जिससे हम आगे हाउस चलाने वाले हैं? पहली बात। दूसरी बात, one minute. I quite appreciate what has come from Mr. Keshav and Tiruchi Shiva as to who those 4 leaders were. But let me tell you, honorable members, I have had a practice that in my capacity as chairman, I will deal with floor leaders of all the parties. Now, how political parties behave is between them. To the extent the chair is concerned, if I have the benefit of one-to-one interaction with leader of opposition, I reach out to other leaders also. So I have a practice that I will be conferring with all the floor leaders. Between political parties, the mechanism may be different. So this can't be an issue here. One second. Sir, as a chairman, you have a right to call anybody. We understand. You would like to build. You like to build a confidence mechanism. You are trying to build a confidence mechanism. We understand. You can call anybody. But a leader of the house selectively asking 4 people to reach him is something which we object to. It is a privilege issue, again, as far as we are concerned. First of all, at the outset, I've already said I never initiated it. I received a request, can you call 1, 2, 3, 4 for a chat? अब मैंने और विषय भी नहीं मालूम था। अगर कोई एक व्यक्ति मुझे कहता है कि हम आपको मिलना चाहते हैं, so Dr. Keshav पे चर्चा करना चाहते हैं, और मैं चारों को बुला लेता हूं, तो उसमें बताइए क्या प्रिविलेज है? और इसमें मतलब मैं अपने कमरे में, माननीय अध्यक्ष, मैं अपने कमरे में किसी को बुलाऊं, उसमें भी पहले मुझे सबकी परमिशन लगेगी, मुझे पहले देखना पड़ेगा मैं 4 को नहीं बुला, और मैंने तो इनिशिएट ही नहीं किया, मुझे तो सब्जेक्ट भी नहीं मालूम था, मुझे तो एक रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट के तहत मैंने बुलाया। जब फिर बुलाया तो एक व्यक्ति आके बोलता है हम आपके कमरे में नहीं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, आई एम ऑन द चेयर, ऑनरेबल मेंबर्स, Allahabad High Court, Allahabad High Court is a very premier high court of the country. When it had centennial celebrations, it came out with 2 volumes. One incident was that during summer months, a division bench was listening to the submissions of a distinguished lawyer. Now the situation was so cool, खसखस लगी हुई थी, पानी गिर रहा था, रूम का टेम्परेचर डाउन था, it was soothing, and one of the judges went to sleep. The junior judge was a very disciplined judge. He followed the senior. So difficulty with the lawyer was, how does the lawyer invite attention of the bench
The books used to be very heavy during those days, so he managed to ensure that the book falls on the ground from the table. Then I said, yes, Mr. So-and-so, what happened? And the response was, my lords, one at a time. I plead with you, let it be one at a time, and I have enough time. Okay, Mr. Tiruchi Shiva, let him respond. Sir. Thank you very much, sir. Sir, the logjam is prevailing for more than 14-15 days, sir. And the oppositions are insisting upon Rule 267 adjournment motion. And the treasury benches are insisting upon 176, a short duration discussion. We are not able to arrive at a common point. And in pursuance of your repeated appeals, sir, the India Alliance, we have evolved an alternative route. That is Rule 167, that on a substantive motion we can discuss the issue on Manipur, sir. And we have very, very magnanimously accepted it. And one moment. He said, I have agreed to consider. We have given a notice to the chairman and it is under his consideration. Yes. That's what we are telling. That's what we are telling. We want to have a discussion on Manipur, sir. So we don't want to stick on to one particular level and let them also not stick to that level, sir. So we request you, sir, kindly consider this and accept. We can start the discussion anytime, sir. Now or 2 p.m. anytime, sir. Thank you very much. And the nation has a right to know what happened. तो मुझे बोला गया कि हम तो आपके कमरे में नहीं आएंगे, आप हमारे कमरे में नहीं आओगे तो सेंट्रल हॉल में मिले। अब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो पूरे टाइम सेंट्रल हॉल में जाके वॉकआउट करके सेंट्रल हॉल में बैठा हूँ। मैंने कहा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं आपके कमरे में आएंगे और सर हम दोनों एलओपी के कमरे में बड़े इज्जत के साथ गए, हमने कॉफी मांगी, पी। अब सर विषय समझे, वहाँ पे एक गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन, इस घमंडिया गठबंधन के सब लोग थे। वहाँ ये प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा गया और साथ में कंडीशन लगाए गए। सर, साथ में कंडीशन लगाए गए। सर, ये जानने की तो हमको आवश्यकता है। Who has given those names for 4 leaders? Why not all the leaders? अगर वो कहते हैं कि मैं, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है। अगर वो कहते हैं दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं मुझे पूरा करना चाहिए तो नाम ले सकते। सुनो वो एक सेकंड प्लीज एक सेकंड 1 second honorable members 1 second honorable members 1 second please honorable members, when we interact informally we share many secrets. I would not appreciate either side to reveal details thereof. I would request leader of the house also, this side also. If you have to find out the 4 names, please do it informally outside the house, because sir, I do not appreciate any member, this side or this side, revealing content of our discussion which has taken place outside the house. You are required to deal strategically, diplomatically, politely, persuasively, and that must be kept outside the house, because this is a respect every member is entitled. I did not take any name, but if Digvijay Singh insists, I want response. I'm ready to say the name right now. Honorable if the members, Honorable LOP wants, 1 second. I'm happy to give the name. Okay. But sir, important point is, you are calling a meeting just now. I would like to know from you, sir, that फिर leader of the house की क्या credibility है? और ये alliance, ये claiming they are an alliance, तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने कहा हमारे 4 लोग honorable members, 1 second. alliance है तो फिर एक दूसरे पे विश्वास है। honorable members, और उस मीटिंग में कई नेता बैठे थे। सर उस मीटिंग में कंडीशन लगाई कि पीएम आने चाहिए बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि 167 पे तैयार है, क्योंकि मिस्टर जयराम रमेश ने अभी कहा, अभी उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ द हाउस हैड एग्रीड। मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए
उसमें प्रहलाद जी और मैंने रिफ्यूज किया कि ये गलत बोल रहे हैं कि मैंने एग्री किया। ऑनरेबल मेंबर, हमने कोई एग्री नहीं किया। ओके ओके, ये गलत इन्होंने विड्रॉ करना चाहिए। फाइन, ओके, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ओके मिस्टर गोयल, यू हैव मेड योर पॉइंट। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा हमने 5 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और हम आपको एक प्रस्ताव देंगे। मैंने एक वरिष्ठ सदस्य को जो उनकी पार्टी की दूसरी पार्टी से उनको फोन किया कि भाई वो रेजोल्यूशन क्या है, बताओ तो सही। मिस्टर गोयल, यू मेड योर पॉइंट। आज तक वो भी नहीं आया। मेड योर पॉइंट। तो ये हवा में फिर हमारे 5 लोग और वो साथ में मिलकर ड्राफ्ट करेंगे। हमारे 5 लोगों को बुलाया नहीं। मिस्टर गोयल, you made your point. Please take your seat now. Make your point. क्या मतलब? Honorable members, ना हमारे लोगों को Mr. बुलाया। Tiruchi Shiva, honorable members, leader of the house, ना हमारे लोगों को please take your seat. ना हमारे साथ चर्चा की, ना कोई कॉमन रेजोल्यूशन बना। ये कमिटमेंट उसने खुद ही दिया था, तो ये तय करे। और honorable members, I do not appreciate. Ask them to sit down. Take your seat. दूसरों के साथ क्या बात हुई? Ask them to take your seat. Mr. Pisgol, take your seat. Please take your seat. All of you. Mr. Vajpayee, please take your seat. Take your seat. I would see, one second. Mr. Tiruchi Shiva has raised a valid point that this stalemate or logjam is not earning us any respect. Further, we are not able to debate Manipur. He has come out with a way. We may, one second, please. We may accept it, we may not accept it. I personally feel the two sides have taken rigid stand. One, 267, 176. Now, if there can be a meeting ground when something has emanated, I only want honorable members to respond to that limited and leader of the opposition. And please, no disturbance. No, please, no disturbance. I will name a person who disturbs this side or that side. Have it from me. No, please take your. Okay, but please take your seat. Sir. Only leader of the opposition. Sir, I request you to focus on 167. Rest is your discretion. But right now, on 167. नहीं, देखिए, मेरे रूम में लीडर ऑफ अपोजिशन, सॉरी, हाउस लीडर आए थे। नहीं सर, ये निकला तो ठीक। तो मेरे रूम में आए थे और वहाँ वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से 176 ना 167 से नहीं 167 तो अब की बात है। पहले तो उन्होंने जो माना था, हाँ, तो उसी पर आप चर्चा कीजिए और सफिशिएंट टाइम हम देने के लिए तैयार है, इसीलिए आप उसी पे चर्चा। तब हमारे लोग ये कहे कि आप लोग 267 को नहीं मान रहे और हम लोग उनके जो 176 को नहीं मान रहे, तो वाया मीडिया एक कोई मध्य मार्ग निकालना चाहिए। हाँ? अरे पहले उन्होंने अलाउ किया था ना, कौन सा किया था? फिर से सुनिए, प्लीज। Mr. Goel, see that there is order in the house. तो एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए। तो वो कौन सा मध्य मार्ग हो सकता है? तो किसी ने और कुछ कहा, मेरे को कुछ काम था, अर्जेंट जाना था, तो मैं उनको बोला मेरी ऑफिस खुली है, आप इस्तेमाल कीजिए, सब बात कर लीजिए, जो कुछ भी चाय पानी कुछ भी होना है तो दे दी। तो वो लोग बात करते रहे, मैं चले गया। तो मैं वहां से चले गया। प्लीज। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आप बैठ के तय कर लो, आप सभी बैठ के तय कर लो किस सेक्शन के किस रूल के तहत चर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने चर्चा कर ली, उसमें एक रेजोल्यूशन के तहत
167 के तहत चर्चा कर सकते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? आप ही ने माना, आप ही ने प्रपोजल दिया, फिर यहाँ मेरे रूम के बाहर आके और दूसरा बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 167 को आप मान्यता दीजिए, चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या? इस सदन का